स्ट्रेच होनी चाहिए आपको. Hold yourself for 10 seconds. Kindly stay in the floor. Okay. Gradually down. हाथ नीचे लेकर आइए. Let's do it one more time. And stretch. Joint fingers. And धीरे धीरे ऊपर जाना है. और फिर हाथ को ऊपर की तरफ. On your toes. On your toes for 10 seconds. Okay. धीरे धीरे एक साथ नहीं आना. धीरे धीरे आना. इसको लेफ्ट थाई पर रखेंगे. Next change. Change now. Left leg on right thigh. ये जो बच्चे गिर रहे हैं इनको इच्छा ब्रेक कैंसिल करके योग ही करवाएंगे. Okay, slowly down. And backwards, hip forwards, जितना हो सकता है. Hold it for 10 seconds. Okay, once more. Let's do it. Slowly up. Turn your legs once again. Hands straight. धीरे धीरे hands को नीचे लाते हुए without bending your knees, toes को touch करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? You need a space. You need a space to do this exercise. इसलिए one arm distance बोला था मैंने. Maintain one arm distance. Forward and sideways. Maintain one arm distance. Let's do it together. धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे. We'll try to touch our toes. Without bending the knees. Up. Out. Okay, again, spread your legs. Spread your legs. We'll do Trikonasana. Okay? So there's a lot of mathematics everywhere. Extend your both arms. Extend your both arms. हम लेफ्ट आर्म को, this is your left arm, ठीक है ना? इसको नीचे साइड करेंगे और राइट आर्म को ऊपर लेके जाएंगे. And we look at the sky. Okay? Let's do it together. Extend both the legs जितना ऊपर हो सकता है legs को ऊपर कीजिए. Okay. Now left bend, left side. Right hand ऊपर. Look at the sky. Look at the sky. ये बच्चों को लेफ्ट और राइट समझाना पड़ेगा आज से क्लासेस में. और प्रॉब्लम है, आधे बच्चों को लेफ्ट राइट समझ नहीं आ रहा. Okay, come back. This is right hand. ये left hand. Okay, again once more. Right side. Left up, right side, left up. Look at the sky. Okay. आपको समझ में आया है किसी को ना? Left bend. Look at the sky. No bending of knees. Normal. Right bend. Look at the sky. Left hand ऊपर. Arm stretched.
ये ऋषि गुप्ता को रोक लेना, कर नहीं रहा, मुझे काश में दिख रहा है, बैंड नहीं कर रहे हैं, भी नहीं कर रहे। Position or mudra position. Okay, hands parallel, arms should be parallel. Okay, that's the first. Now we take a deep breath और पीछे की तरफ जाएंगे। 2 में हम टॉस को टच करेंगे, 2। 3 में हम नीचे बैंड करेंगे और आप राइट लेग को पीछे जाएंगे, 3। राइट लेग को पीछे लेके जाना है, या राइट आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 में दोनों लेग को पीछे, पुशअप पोजीशन, पुशअप डालना नहीं है, पुशअप पोजीशन ऐसा किया। 4 जैसे पुशअप पोजीशन। 5 में अपने नीज को टच करना है और चिन को टच करना है, नीज और चिन दोनों को टच करना है ग्राउंड पे। 6 में इंक्लाइन प्लेन, 6 में इंक्लाइन प्लेन। अभी इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, अगर बॉल को ऊपर से थ्रो करेंगे तो स्लाइड करेंगे। 8 प्लैंक, 8 प्लैंक। 9 में राइट लेग आगे वापस, गुड, 10 and again. Okay, so this is 1. We have to do it 3 more. So 1. And now I'll not say what we have to do. We have to just do it, counting. 1, 2, 3, 4. Right leg आगे. 5. दोनों मिनट legs पीछे. 5, 6. Chin touch, knees touch.